Hey guys, hope you all are doing great. It's been a long time, so today I'm gonna make the video on how to resolve the issues or problems you are getting while using the external hard drive or your internal hard drive as well. I will, as usual, I will try to communicate in Urdu, Hindi और English as well. So आज जो है वो मैं ये वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा और ये चीज़ बताता हूँ कि अगर जी आप ये इशू फेस कर रहे हो अगर कि जिसमें आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या इंटरनल हार्ड ड्राइव के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो या उसके कुछ बैड सेक्टर्स जनरेट हो गए हो, सो यू विल बी एबल टू रिपेयर दो सेक्टर्स और फॉर टाइम बीइंग यू कैन just disable those sectors. So here we go. You just need to move to your browser and just type hard disk. You just need to type hard disk and HD Sentinel. आपको बस ये टाइप करना है HD Sentinel, देन यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा सबसे पहला, ये मैं लिंक डाल भी दूँगा डिस्क्रिप्शन में. बस आपने कुछ नहीं करना, आपने जाके जस्ट ये ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर लेना है और बस हम इसी को यूज़ करेंगे. मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ. यू जस्ट नीड टू डाउनलोड दिस ट्रायल वर्जन हेयर, नथिंग एल्स. आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड, सो आई एम गोना यूज़ दैट वन. सो I am writing it here in my search box, hard disk Sentinel, because I already have it. Yes, here it is. So this is the hard drive which is with 100% health. It shows. Alright, this is my internal hard drive, but this one is my external hard drive, which just unfortunately we have some bad sectors. ये मेरी वो हार्ड ड्राइव है जो एक्सटर्नल है, ये मेरी इंटरनल हार्ड ड्राइव है ऊपर वाली. जो नीचे वाली एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है इसके अनफॉर्चुनेटली कुछ बैड सेक्टर्स इसमें जनरेट हो गए. तो सो आई विल जस्ट क्लिक हियर. सो इट्स ऑलरेडी ओपन, सॉरी. Then here the smart option we will be opening this option. हम इस ऑप्शन को खोलेंगे, देन हम इस एक्सक्लेमेशन मार्क को ढूंढेंगे. जितने एक्सक्लेमेशन मार्क है वो सब हमारे टारगेट होंगे, वो हमारे सब बैड सेक्टर्स को रिपेयर करने के लिए हम उसको टारगेट बनाएंगे. सो विल बी लुकिंग फॉर द एक्सक्लेमेशन मार्क in this list, in this complete list. Yeah, there's only one. You can have multiple as well. So just what you will do is basically you would be having like something like this. You just go here, अब यहाँ पे आ जाए, right, just click just right click on it, then click on decimal data fields. आपने ये decimal data fields पे click करना है, then you have a number here, decimal number here. So you just need to click here and this pop-up will appear, and then you need to click on OK. Then you need to type the exact number which was present here against the exclamation mark, exact decimal number with a negative sign. That's for sure. Keep in mind, please use the negative sign with it. So I will write here -9. आपने जस्ट नेगेटिव साइन यूज़ करना है और नंबर आपने यही डेसिमल नंबर यूज़ करना है. राइट क्लिक करके आपने डेसिमल पहले वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आपने माइनस साइन ज़रूर लगाना है और बस इसको ओके कर देना. As soon as you did this, you will get 100% health. So here, that's it. It's just that easy to do, and it will show you hard drive health is now 100% here. Alright, this is my internal hard drive which is already 100% health. This is my external hard drive which is now become okay with 100% health. So that's it guys. ये आज की वीडियो में बस मुझे ये बताना था कि ये मेरी इंटरनल हार्ड ड्राइव है. देख सकते हैं आपकी 100% हेल्थ ऑलरेडी थी, लेकिन यहाँ मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे 100% हेल्थ नहीं आ रही थी, 95% शो हो रही थी, जो कि अभी हमने करेक्ट किया वैल्यू को, एंड दैट्स इट. ये हमारा काम हो चुका है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस video, and please subscribe to this channel so you will get more informative videos. Thank you. Allah Hafiz.